Namaste, everyone. So I've been getting a lot of calls from teachers and principals requesting me to make a video on, the training program reporting to COE. In fact, we all received a mail from Cbse Coe Pune, and if you're from any other COE as well, you must have received a mail regarding the annual report of the training programs conducted for teachers and principals of the school. I will first show the mail that has come to our mailbox, and then I'll let you know what to do about it. But before I start, let me just thank Shweta Moon ma'am, who is the head of the COE Pune, for permitting me to make this video so that all the school leaders and the teachers are updated with what exactly COE wants, what the affiliation bylaws tell, and how they should go about it. So I had certain doubts myself, which I got clarified from Shweta ma'am. And so a big thanks to Shweta ma'am for clearing all my doubts and allowing me to clear the doubts of other schools and teachers and principals. So let me just share my screen with you first. And this is the mail that I am referring to. Annual report of the schools on training programs conducted. It was sent on 15th Feb 2022, so roughly 7 days ago. And in that mail, it has been very clearly said that this is a reference notification number 16/2021 dated 24/9/2021 of the affiliation unit regarding the amendments in the clauses of affiliation bylaws related to in-service training of teachers. So affiliation bylaws in-service training of teachers के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ affiliation bylaws change हुए हैं. We will see that circular as well, which has amended the affiliation bylaws related to training, mostly because the NEP talks about training, the number of hours a teacher or a principal should go through training. So all these things have been specified in the NEP, and based on the NEP, CBSE has made the amendment in the affiliation bylaws. So ये उस circular से relate किया हुआ है इस mail को. Then in this regard, you are kindly requested to provide the annual report of your school on the training programs conducted during the calendar year of 2021. For this purpose, kindly follow these steps. Now, first question over here, what is the meaning of the calendar year 2021? Is it from January 2021 to December 2021? Or is it from April 2021 to March 2022? This was the first question that I got. So let me clarify that here, Shweta ma'am has very clearly told that every school has its own calendar. So if you have a calendar which starts in the month of Jan and ends in the month of December, you can go ahead with that. Or if you have a calendar that starts with the academic year, April 2021, and will end in March 2022, you can, persist with that as well. तो कोई भी चीज आप follow कर रहे हो, January to December या April to March, both are right. You can go ahead with whatever format you have been following so far. Next is download the Excel sheet from the following link. Now Excel sheet बताने से पहले मैं आपको circular दिखाता हूँ. What the circular is talking about. This is the notification number 16/2021. And amendment of the affiliation bylaws made. Let's see what it is talking about. Pehla hai clause number 16.1.1. If you go into the lines of CBSE affiliation bylaws 2018, वहां पर बताया हुआ था every school shall organize 3 days in-house training program for every teacher at school level. Now this was in the affiliation bylaws 2018, which has been changed after the NEP was published. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Every school should ensure that all the teachers must participate in at least 50 hours of continuous professional development. Out of these 50 hours, CPD of 25 hours shall be completed by the teachers in the programs organized by the board or by the state government or government regional teachers training institutions. And schools shall organize remaining 25 hours of CPD in collaboration with school complex of CBSE or in-house programs. Now this has very clearly defined that 50 hours of CPD जो है उसको दो हिस्से में divide करना है.
25 hours of CBSE COE training or training by any government institution, whether it's a central government institution like National Council for Educational Research and Training, or it can be a SCERT or any other state government authorized training institute. This training institute cannot be, recognized by government. Many training institutions are recognized, but what it is telling over here, organized by the board or by the state government or government regional training institutions. So these trainings should be organized by the government level institutions only, not any private institution which has been recognized by a government or something like that. So this is not to be done. And remaining 25 hours, in-house training in collaboration with the school complexes like the hubs of learning or the Sahodaya. Now, school complexes basically means Sahodaya as well, right? So Sahodaya or hubs of learning, both the cases, in-house training, hub of learning training, Sahodaya training, that will be in one half, 25 hours. And the remaining 25 hours will be in the level of government trainings organized by government. And this will include certain, online training options as well, like the Diksha, the Nishtha, the Swayam, all these portals. If you are getting trained through these government portals, that will also be counted in the 25 hours. So I hope it is very clear. 25 घंटे का ट्रेनिंग जो है CBSE COE, Diksha, Nishtha, Swayam, NCRT, SCRT, or any state government or central government initiated training program counts in that 25 hours. Remaining 25 घंटा जो है वो in-house school training, Sahodaya training and hubs of learning training. यहाँ पर Sahodaya training के बारे में मुझे कुछ बताना है, वो मैं बाद में बताऊंगा. I'll not tell it right now. I'll just translate the circular as it is as of now. तो ये 25-25 घंटे का फंडा मुझे लग रहा है क्लियर हो गया. अभी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूं. Every school should organize at least 2 days. ये पहले दिया हुआ था एफिलिएशन बायलॉज में कि 2 दिन का ट्रेनिंग करना है सीओई के साथ. इट हैज बीन डिलीटेड एज जो ट्रेनिंग का आवर्स है 50 आवर्स, उसको 25 आवर्स में डिवाइड कर दिया गया. सो ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग बताया गया था उसका जरूरत नहीं रहा. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग रूल एक था कि एवरी स्कूल शुड ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया था अलग से 2 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए, बट नाउ इट हैज बीन अगेन करेक्टेड और अमेंडेड. एंड क्या बताया गया उसमें, एवरी स्कूल शुड इंश्योर दैट प्रिंसिपल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स must participate in at least 50 hours of CPD. Out of these 50 hours of CPD, 25 hours shall be completed by the principal and school complex leaders in programs organized by the board or by the state government or government regional teachers training institutions. So teachers के लिए जो policy लागू है कि 25 घंटे का ट्रेनिंग आप या तो CBSE से करवाइए COE, या फिर आप दीक्षा, निष्ठा, स्वयं ऐसे पोर्टल से करवाइए, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आप करवाइए. तो ये जो 25 घंटा है, दिस शुड बी प्योरली गवर्नमेंट ट्रेनिंग. हियर लेट मी एम्फसाइज, प्राइवेट ट्रेनिंग इसमें नहीं काउंटेड होगा. नो मैटर हाउ बिग दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इज, इट विल नॉट बी काउंटेड. लेकिन जो बाकी का 25 घंटा है उसको मेकअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका स्कूल कॉम्प्लेक्स के जरिए आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन हाउस ट्रेनिंग, वो जो सहोदया है उसके जो सहोदय का प्रिंसिपल्स है वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं. बाहर से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के कोई आप ट्रेनर को बुला सकते हो. सो ऑल दीज विल बी स्कूल इनिशिएटेड ट्रेनिंग्स एंड दिस शुड हैव, the total duration should be 25 hours. This is applicable for the teachers, applicable also for the principals. उसमें और एक क्लॉज था एफिलिएशन बायलॉज 2018 में कि 5 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा हर 3 साल में. सो 3 days every 3 years, 5 days of training. It is deleted. Why? Because now it has been told very clearly, 1 साल में 50 घंटा करना है. तो ये 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ये जो पहले का एफिलिएशन बायलॉज में लिखा हुआ था, it is now amended. और एक चीज है जो लास्ट में बताया गया है, the entire training program as specified in clause number 16.1 and 16.2 and sub clauses thereto shall be properly videographed. तो ये एविडेंस रखने के बाद बोला गया है. तो अभी क्या, पहले जो भी बोला गया है वीडियोग्राफ के बारे में बताया गया था, अभी फिर से बताया जा रहा है वही चीज. द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड
in clause number 16.1 and sub clauses thereto shall be properly videographed. कौन सा ट्रेनिंग वीडियोग्राफ करना है? जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो इन हाउस उसको भी वीडियोग्राफ कीजिए. अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, you can videograph such trainings as well and document it including training participation certificates. Now अगर आप स्वयं में ट्रेनिंग कर रहे हो, निष्ठा में कर रहे हो, दीक्षा में कर रहे हो, it's not like you have to videograph for the entire 4 hours or 5 hours that you are attending a training on your mobile phone, but there are certificates for that. So you can produce the certificates as an evidence. COE का ट्रेनिंग जब आप करेंगे उस समय भी सर्टिफिकेशन का लिंक आता है. Make sure you do not miss those links. जैसा जैसे बताया गया COE में, लिंक को फिलअप कीजिए, अटेंडेंस लिंक को, फिर वापस आके पोर्टल में फीडबैक दीजिए, and then you will get the certificate. Similarly, if you're doing trainings in on behalf of Sahodaya, hubs of learning, there also proper certification, preferably videographed. These trainings जो in-house है उसको आप लोग videograph कीजिए and maintain the certificates also. The certificates can be issued by the Sahodaya. For example, I am the president of Buldana Sahodaya. So if I am doing a training for my Sahodaya, it will not be under my own letterhead. It should be a letterhead, or the certification head would be Buldana Sahodaya School Complex. इस तरह का बुल्डाना सहोदया या जलगांव सहोदया, नागपुर, पुणे, Mumbai, Aurangabad, or Nasik, all these sahodayas are there, we are connected with. So these sahodayas can conduct their own trainings and issue certificates under the heading of their own sahodaya school complex. Similarly, hub of learning का भी training है अगर, तो आपका each hub has a number, right? So you can use that number, hub of learning, you give the number, so that is the certificate issued by the hub. तो इस तरह का certificate आपको preserve करना है. So I hope this circular is very clear now. अभी हम लोग मेल में आएंगे, तो मेल में सब बताया हुआ एफिलिएशन बायलॉज में हमको ये चीज करना है, और अगर आप नहीं करोगे आपका एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ एफिलिएशन may get affected. ये किसी को डराने के लिए नहीं बताया गया है. This is a compulsory thing that the National Policy of Education is talking about. This is a compulsory thing that CBSE affiliation bylaws echoes the spirit of the National Education Policy, and ट्रेनिंग के बारे में CBSE जो भी बता रहा है, that is just a mirror reflection of what the NEP is talking about. तो ये आप समझ सकते हो कि 50 घंटे का ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है. Now, what is being told? You download the Excel sheet from the following link. एक लिंक है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये एक गूगल फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, राइट? और गूगल फॉर्म डाउनलोड होने के साथ एक लिंक दिया गया है. इस लिंक को भी आप ओपन करेंगे तो स्प्रेडशीट ओपन होगा, मैं बाद में दिखाऊंगा. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म, यू कैन राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, स्कूल एड्रेस, affiliation number, school code. Now, for example, you must be aware that every school has a school code जो एग्जाम में भी यूज होता है, तो वो डालिए यहाँ पर. Level of affiliation, is your school a secondary school or a senior secondary school? Depending on that, you will select any of these radio buttons. These are called radio buttons, where you can select only one of them. Name of the principal, total number of NTT. What is NTT? NTT is nursery trained teachers, right? So these are pre-primary teachers, you can say. Then the primary teachers, then the TGTs, trained graduate teachers, and if you're a senior secondary school, number of PGTs. तो हमको ये नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि उन नंबर से हमको सीधा मल्टीप्लाई करना है 25 hours to get the CBSE and government trainings, with another 25 hours to get the in-house training. So total 50 घंटा एक टीचर ट्रेनिंग अटेंड करेगा. 25 घंटा गवर्नमेंट लेवल का, 25 घंटा in-house सहोदया हब ऑफ लर्निंग, इस तरह का ट्रेनिंग. Now once you have done that, detail of the training program uploaded by Excel file. Excel file कौन सा है? Excel file एक फॉर्मेट आपको दिया गया है इसी मेल पे. The next day, in fact, there was another mail that was shot from CBSE COE से, CBSE COE से, और वो ये Excel sheet है. मैं इसको खोलता हूं. It's a format. So this format you can open up. इसको खोलिए. इस तरह से एक टीचर का बनाया हुआ है. So depending on the number of teachers, you can fill up the details. ये दर्शना सिंह, primary teacher,
50 hours of training programs completed, ये total number of hours आ रहा है, लेकिन इसको भरना कैसा है, उसका लिंक जो है वो भी उस मेल में है। देखिए ये मेल में इनफैक्ट जब आप ये फॉर्म खोल रहे थे गूगल फॉर्म एनुअल रिपोर्ट का, there is a link over here, point 3. When you open up that link, it opens up like this. I'll open this up and show you. इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, ये खुल रहा है, राइट? तो यहां पर आपको क्या करना है, स्कूल नेम, स्कूल अफिलिएशन नंबर्स, एंड देन नेम ऑफ द टीचर, डेजिग्नेशन. इट शुड बी लाइक एनटीटी, पीआरटी, पीजीटी एंड पीजीटी. Don't use other designations like coordinator, administrator, not required. So your designation should be only entity, TGT, PGT, PRT, principal, right? And if there's a vice principal, you can put vice principal as well. Other designations you please do not mention over here so that it's easy for the COE to calculate. So name of the teacher, for example, if you scroll down, यहाँ पर name दिया हुआ है teacher का, इस box में हेमंत सिंह. Designation is PGT. उन्होंने कितने घंटा पूरा किया? 45 hours. So out of 50 hours, now again understand this, 50 hours is the minimum number of hours that has been told, but there are schools who have not reached that figure. किसी ने 10 घंटे को करवाया, किसी ने 8 घंटा कराया. So it's okay. You need to understand where you really stand. This is not a step to penalize you. This is a step just to make you aware of what you need to do. तो ये जो है आपको दिखाने के लिए ये एक फॉर्म दिया गया है, एक्सेल शीट. इसमें देखिए क्या करना है, टाइटल ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडरगॉन. सो टाइटल ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम which is conducted by COE is given over here and organized by which COE? Is it Chennai? Is it Noida, Pune, Allahabad, Delhi West? So whatever, there are many COEs. So आप COE के कोई भी COE का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, and you know how to attend it because I have already shared a video earlier how to go into the CBSE training portal and register for a training. तो वो ट्रेनिंग पोर्टल सब रजिस्टर कीजिए और आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, एक एक टीचर को ट्रेनिंग अटेंड करवाइए. Now if you have done something, let's say foundation literacy and numeracy, FLN, जो आपने दीक्षा पोर्टल से किया हुआ है, so you can write Diksha over here or Nishtha over here. See, this is written over here, Diksha. So all these things are, see, so many Diksha trainings, 1, 2, 3, 4, 5. So all these trainings are from Diksha. So either a COE or Diksha, Nishtha, if you have done anything from state government, you can write those as well. तो ये हो गया. और ये कितने घंटे का ट्रेनिंग था? So normally webinars अभी जो CBSE कंडक्ट कर रहा है वो 1 घंटे का है. So 1 hour training for this particular module or topic. Now let me just remind this. कि आप लोगों ने जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर खासकर, you have attended the annual pedagogical training, right? Annual pedagogical planning का ट्रेनिंग आपने किया. पहले 2 दिन का 3 दिन का हुआ था, फिर 2 दिन का हुआ, right? So 3 + 2 5 days. So if you have attended the APP training, 5 × 5 hours, लगभग 5 घंटे का ट्रेनिंग था ये. So 5 × 5, 25 hours for principals is already met by the annual pedagogical plan training. इसके अलावा आपने जो ट्रेनिंग अलग से किया COE से कहीं और से, वो भी आप ऐड कर सकते हो. Even for teachers, there will be a difference of hours. किसी ने 45 घंटा किया. This teacher has done for 36 hours. This teacher has done only for 13 hours. This teacher has done for 7 hours. So what I recommend over here strongly is, be honest in whatever you're sharing. Make sure that the certificate is there. आप उसी ट्रेनिंग का जिक्र यहाँ पर कीजिए. Mention only those trainings for which you have a certificate as an evidence, or you have videographed that training as an evidence. So certificate is a must, whether it's a CBSE COE or any in-house training. In-house training में, in addition to that, you should have also videographed. Now यहाँ पर देखा जाए तो आपको ना यहाँ पर certificate मांग रहे हैं COE, ना यहाँ पर videograph मांग रहे हैं, क्योंकि the volume will be very high. अगर इतने टीचर्स ने सर्टिफिकेट भेजना चालू कर दिया, CBSE का मेल बॉक्स भर जाएगा. So it's not asked for. But CBSE COE can check randomly any school and any teacher. So you should be prepared for that. आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हो, be honest with that. अगर आप कुछ ट्रेनिंग मार्च में करवाने वाले हो, for example, April to March आपका चलता है. Now you have decided that I have till now I have reached 16 hours. लेकिन मुझे और 16 + 9 घंटे का ट्रेनिंग करवाना है,
तो you can mention that also over here, क्योंकि मार्च का ट्रेनिंग का जो प्रपोजल्स है उसका कैलेंडर अभी खुल जाएगा COE में, ट्रेनिंग पोर्टल में, उसको आप एनरोल करवा सकते हो अभी से टीचर को. Once you enroll, you can put that. If you're planning to do certain Diksha trainings, you can also put it over here. Though it's in the planning stage, but you have to write it and then ensure that you have done the training and the certificate is generated and you keep the certificate. तो ये नहीं कि जितना ट्रेनिंग हमने करवा लिया है, अगर आप मार्च में मेकअप करना चाहते हो उसका भी आप यहाँ पर स्कोप है, you can do that, right? So what Shweta ma'am told me is, we are not asking for the certificate right now, but the schools should be ready with the certificates. Whenever we ask for it, they should be able to produce. And in case ये मार्च का जो मैंने बताया, she specifically mentioned this to me that sir, अगर कोई मार्च का करने वाला है ट्रेनिंग, they can write that over there and ensure that it is done and the certificate is there. फिर कोई problem नहीं है. So this is what the head of COE Pune informed me. So this is, I think, is pretty simple. कुछ भी नहीं करना है, एक Google फॉर्म भरना है और स्कूल ट्रेनिंग नोडल कोऑर्डिनेटर को इस तरह का टीचर वाइज एक्सेल शीट भर लेना है. तो इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यू कैन ओपन अ गूगल शीट जहां पर मल्टीपल टीचर्स कैन वर्क टुगेदर. आइदर यू कैन डू दैट वे और यू कैन गिव अ गूगल फॉर्म, लेट द टीचर्स फिल अप देयर ओन trainings that they have attended. You can copy and paste from the Google फॉर्म का जो एक्सेल शीट रहता है बैकएंड में, उससे कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो. तो यही फॉर्मेट आप गूगल फॉर्म में शेयर कर सकते हैं and the teachers will fill it up and submit in Google form. So the school training nodal coordinator will not have to collect it individually. एक Google form का Excel sheet में generate होगा, वहां से वो copy paste कर लेंगे, right? But make sure that the training names that you are mentioning, ये teachers को बता दीजिए या मेरा वीडियो को दिखाइए उनको कि training जो name है वो properly लिखे. 21st century skills, addressing challenges in post-COVID schooling. तो यहाँ पर post-COVID schooling मत लिख के छोड़ दो. Whatever is the name of the training in CBSE, जो टैक्सोनॉमी है, नोमेनक्लेचर है, उसको फॉलो करो, राइट? एंड आल्सो द COE who has organized that training and you are attending that training and the duration, right? अभी एक सवाल है, दीक्षा और निष्ठा का ड्यूरेशन कैसे पकड़ेंगे? नाउ गोइंग बाय सिंपल लॉजिक, दीक्षा में अगर 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, each module you can consider for 1 hour. So if there are 5 modules, that's a 5-hour training. If it's a 4 module training, it's a 4 hours training, and so on. If you have any doubt, you can put the question in the comment section of this video and your doubt will be cleared. अभी एक और बड़ी बात है, I hope this part is clear, right? पहले मैं ये चीज समझ लूं, आपने affiliation bylaws समझ लिया very clearly कि आपको evidence maintain करना है सर्टिफिकेट और वीडियो के तौर पे, 50 घंटे का ट्रेनिंग करना है, 25 hours गवर्नमेंट और CBSE का, 25 hours प्राइवेट स्कूल कॉम्प्लेक्स हब ऑफ लर्निंग इन हाउस ट्रेनिंग्स. और क्या करना है, पहले का जो 2 दिन 5 दिन का जो कॉन्सेप्ट था वो अमेंड कर दिया गया और अभी हर साल 50 घंटे का CPD कंप्लीट करना है. और ये है सर्कुलर, द नंबर. आई विल पुट दिस सर्कुलर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. यू कैन रेफर टू दिस सर्कुलर फ्रॉम देयर. वन मोर थिंग दैट आई विल शेयर विद यू, आई विल स्टॉप द शेयरिंग फर्स्ट. बहुत स्कूल्स ने मुझे ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जो डिजिटल आईडी है उसका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है. टीचर्स हैव misplaced the password or forgotten it and they are not able to open the digital IDs. Or for some teachers who have joined new, for them digital IDs have not been created. Now CBSE COE has given a link which I will again paste in the comment, not the comment section, the description section of the video. You can see the description section of the video down and the link I'm pasting over there. You can click on that link to generate or inform COE that you need to create digital IDs for certain teachers and you can fill it up and submit. So this is the procedure. Digital ID जिन्होंने खो दिया, जिनका डिजिटल आईडी खुल नहीं रहा है, लॉक हो गया कोई कारण से, जिन टीचर्स का डिजिटल आईडी बना ही नहीं है, उन टीचर्स के लिए मैं ये लिंक जो श्वेता मैम ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है, I'm putting that in the description section. Click on that link, open it, submit your requisition. And do not expect the reply in the very next day. There are so many schools under COE Pune, so it will take some time for the COE to respond and reply. You have to patiently wait for that response, right? Maximum you can give a reminder, after 15 or 20 days. That's it. Now the question is, when do we need to submit this report? The time given was 10 days, but you will not be
penalized if you are not submitting within 10 days. You will get a reminder from COE that you need to do it within next 10 days or 15 days. So they are giving you enough time. Time आपको दिया जा रहा है 10 दिन के बदले में 20 दिन दिया जा रहा है. But you start working. अभी आपने कोई कुछ किया ही नहीं है. एसटीएनसी ने रिपोर्ट ही नहीं लिया टीचर्स से, तो आप कैसे उसको भरोगे? तो you should start. अगर आपने 7 दिन में अभी भी कुछ भी नहीं किया हुआ है, आज स्टार्ट करो. Tell your STNC to create that Google form, send it to teachers. टीचर्स को बोलिए अपना ट्रेनिंग डेटा रेडी रख के प्रॉपर में जिसके सर्टिफिकेट है उसको देख के ट्रेनिंग भरो, कौन सा सीओई से है, कितने घंटे का है, दीक्षा ट्रेनिंग किया तो ट्रेनिंग का नाम क्या है, एक एक मॉड्यूल को एक एक घंटा पकड़ के उसका ड्यूरेशन लिख दो एंड फिल इट इन दैट वे. और यूनिफॉर्म करने के लिए मैं थोड़ा सा टिप दे रहा हूं. इफ नंबर ऑफ आवर्स आपको करना है तो कोई टीचर 4 आवर्स लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, ऐसे नहीं करते हुए नंबर ऑफ आवर्स 1 2 3 4 से न्यूमेरिक वैल्यू रखिए, तो उसको कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगा. राइट. So that's all about it. Remember the affiliation bylaws amendments. Circular मैं description में डाल रहा हूँ. Remember the link for the Google form that's already there in your mail of CBSE Shiksha ID, and I'm also putting that link in the the description section. Apart from that, those who do not have the digital IDs, they can create or request the creation of those IDs or resetting of the passwords using the link that I'm putting in the description section. And if there are any more questions, you can put that question in the comment section and I will try to answer those as far as practicable. और एक चीज आ सकता है आपका दिमाग में, एक टीचर 5 महीना ज्वाइन किया हुआ है, how many hours of training should we do? No, even if the teacher has joined before 5 months, the 50 hours is still applicable for the teacher. ऐसा नहीं कि 5 महीना पहले ज्वाइन किया तो 50 घंटा उसके लिए applicable नहीं है. But if the teacher has not met that 50 hours and does something logically, for example 50 घंटा है तो एक महीने में कितना होता है? If there are 12 months, 12 4s are 48. So उन्होंने अगर मंथली 4 घंटे का ट्रेनिंग भी किया हुआ है 5 महीने में 20 घंटा, that's also okay. It's not like ये ठीक नहीं है. आपने देखा था अभी मैं जो शीट दिखाया था उसमें 7 घंटा भी लिखा हुआ है, कोई टीचर का 8 घंटा भी लिखा हुआ है. So this is the way. So remember, in-house training और CBSE COE training दोनों मिला के अभी आपको लिखना है. You can write over there COE Pune, COE Noida and things like that. And if it's in-house, you can mention in-house and the training, किस banner में training हुआ, Sahodaya, Hub of Learning and so on. So Shweta ma'am has given a little bit of liberty as well, that if there are Sahodaya trainings which has been done, using a government training institution, government recognized training institution, that will also be counted in the 25 hours of CBSE COE or government training. अपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन है या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इस तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से अगर सहोदय में ट्रेनिंग करवाया, उसको भी आप 25 घंटा जो CBSE COE है उसमें काउंट कर सकते हो. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. बहुत बड़ा बात नहीं है. एंड डू नॉट टेक द प्रेशर ऑफ मीटिंग द टारगेट. आप कितना लॉजिकली कर चुके हो, कितना हो सकता है, उस दीक्षा निष्ठा ट्रेनिंग टीचर्स कैन डू इट इजीली. 2 दिन 3 दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम आराम से कंप्लीट कर सकता है. और एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर 4 घंटे 5 घंटे का है, सो वहां पर 12 घंटा 3 दिन में मीट हो सकता है. तो यू कैन टेक 10 days टाइम फ्रॉम नाउ मे बी and then submit it in a proper way so that the CBSE COE can get the real count. So I hope this video is clear. And again, if you have doubts, feel free to put it in the comment section and do not miss the links that I'm putting in the description box. So again, a big thanks to Shweta ma'am, CBSE COE Pune head, and all the teachers and principals who are watching this video. I would recommend please share this video to as many schools, teachers and principals as you can. I will be sharing this video in my group of Maha Sahodaya, where all the Sahodaya heads are there. So I request them to share this video in their Sahodaya groups as well. And if there are hub leaders, please share it in your respective hubs. So thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Wait for my next video. Namaste. And I forgot something. Do not forget to subscribe my channel and click on the bell icon. I'll make a lot of useful videos for you. तो जिन्होंने अभी तक मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं किया चैनल का, नीचे में सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके सारा नोटिफिकेशंस पाइए. So thank you. Have a good day and share this video with as many leaders
teachers and principals as you can.